ठीक है। अभी मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? मुझे एक बार वापस कंफर्म करो। एकदम क्लियर है कि कम आ रही है, ऐसा कुछ है? ओके, so guys, I hope my audio is clear to everyone. If it is not clear, just do let me know in the comments. And now let's start our video. So my gadget is asking, sir, what is the difference between standard deviation and variance? That's a good question. It is related to statistics. And what I'll do, my gadget, I'll separately make a video on this, because explaining you in 1 minute, you will not understand in a clear way, I can tell it. But I'll make sure tomorrow itself I'll upload a video on this topic. Just do let me down, or let me note it down. I have noted my gadget. What I'll do, guys, in the upcoming days, I'll start creating videos on some topics on statistics. Especially it will help to those people who are preparing for clinical SaaS programmer role. Initially it is not important, but जब आप आगे जाके काम करते हो तब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. Good evening everyone. I am good. How about you? Now very clear. Thank you. Sir, R programming is mandatory with SaaS? No, as of now not. So Gaurav is having a question, why currently not openings for SaaS? The reason is the same, Gaurav. Companies don't hire every month and every day. They hire in a pattern. Like if you hear just 2-3 months back or 1-2 months back, a lot of companies like Sino, GSK, recently IQVIA, and before that Efficacy, they hired a lot of candidates, right? Now, most probably, if they have hired sufficient candidates, or they have hired one batch, okay, of fresher, not as for sure that next month or next to next month, just after that month, they are not going to hire continuously, right? So because they have to train the freshers first, then again they are going to hire fresher. So if they have hired just 2 months back or 1 month back, so again for sure it's gonna take 3 months or 4 months, okay, again in the next opening. But most probably at the year end, what I have seen, a lot of openings are there. Okay, animal and nature, what is more important, clinical science or data science? See, data scientist is someone that is a little different, not very much. And clinical science is like who is someone who is analyzing the clinical data only. So if you are preparing for clinical science, apart from the data analysis, you need to have different knowledge of like SDM, ADAM, table listing, protocol, study oriented knowledge. Okay. So you need to decide first what do you want to become, a clinical science programmer. If you belong from life science or statistics, mathematics, this background, you can prefer any of this. If you want to work in a clinical research organization, CRO, as a data analyst, then clinical science. If you want to work in the open market, okay, then data science.
So in larger view, if you go in detail, then both are different. Okay. But if you see in larger view, both are data analyst only. A data scientist is also like a data analyst only, because a data scientist will perform a lot of things, mapping the data, or like looping the data, how the data will come, analyzing the data, finally getting some meaningful outcome. And the clinical SaaS programmer will also do the same, but a clinical SaaS programmer will perform these things only for clinical industry. That is like your focus should be on which industry you want to work. It's upon you. Sandesh is asking when R programming will be used with SaaS. We don't know like about future. See, in future the things will keep changing. I can't tell you what will happen in the next 10 or 20 years. But what I can tell you for sure, if you are working as a data analyst, let's suppose on any tool, either SAS, R, or Python. Let's suppose after 20 years, some other tool is some other software is coming. Apart from this SAS, R, and Python, some fourth software is coming. Okay, so you don't need to worry about that. The simple way is just learn it, because you are already working as a data analyst. The another tool which they will be making, the software engineers or anyone who is creating the software, any company who is creating, that will be very similar to the previous tool. It's like if you know SAS, you can easily work on R, you can easily work on Python. The same way, if you know Python or R, you can easily learn SAS as well. Okay, so that's not difficult. So don't worry about like when which software gonna used. We just focused about now which software is currently being used in the companies on, and on which softwares companies are taking the interview. That's all. Ans is asking clinical SaaS programmer highest salary one can accept. That is, I think, 10 to 11 LPA as a fresher. But if you are like going for 11 LPA, so that is on campus, what I have seen from campus. If you are getting selected from your college, okay, and if you are getting selected through off campus, then the highest salary I have seen, that is around 9 LPA, 8.5 to 9. Samir, pharmacy graduates are apply for data analytic role like Power BI or Tableau or like Visual Studio tool. See guys, what I'll tell you, now what is happening? Okay, I'm answering to the Samir question. So Samir, अभी industry में क्या हो रहा है कि data analysts are not only in a single company. Data analysts are everywhere, in banks, in insurance firm, in CROs, everywhere, in Google, in Amazon, okay, everywhere. Now, if you belong from pharmacy, life science, or any related background, then you should choose a relevant industry like pharmaceuticals, clinical research, these organizations. So, in the data analysis, what you can do, you can find a specific role. Okay, I belong from B pharmacy or life science or these background. Now, what are the related roles in the industries I can work, and the related industries? Like you belong from pharmacy, so you can work in pharmaceutical as well and CRO as well. Okay, so in the pharmaceutical or CRO, which is the role where we need to perform data analysis? And if we need to perform data analysis in any CRO, what is the role, and then what is the requirement in that role? Which data analysis tool I need to learn? Okay, so you can go in this way. Instead of learning randomly softwares, you should be learning in role oriented. In which industry I want to work, and in that industry,
if you want to work as a data analyst, okay, this role is a data analyst, and here I need to perform analysis, and now you need to figure out on this particular role, okay, if this role is in demand, which tools I need to learn, what are the requirements of tools, and learn those tools. Instead of learning first tools like Power BI, Python, and R, and then deciding on which role I need to work in which industry I need to work. This is a reverse process. Gaurav is telling, I completed internship at Pfizer but not getting opportunity, sir. So Gaurav, ये I think ये जो जून में इंटर्नशिप हुई थी, आप उसमें ही सेलेक्ट हुए थे? You got selected in that internship only? Just confirm me once. ये आपने पहले इंटर्नशिप की है? अनिमेश, which month may calls are happen? See Animesh, if we talk about calls happen every second or third month. Okay, but the quantity you will find like in every 4 or 5 months you will find in quantity calls, like because what happened, companies will hire some students, each and every company 10-15. Again, for those candidates, like they will give the training, and once they will move to the another role after 4 or 5 months, they will again hire in bulk. Okay, but in the mid, like before 5 months or 6 months, also some like mid-sized company or any company will be hiring for maybe 5 roles, 10 roles in the mid. But within a span of 4 to 5 months, each and every company will be hiring. What I'm trying to say, then you'll find large number of vacancies. But if I see like recently, last week only, within this last 3 weeks, one of our student got 2 interviews. Okay, that is not big company. One was like a mid-sized consulting firm. Okay, and another was like a CRO, a mid-sized CRO. So yeah, like some vacancies will come in the mid. Okay, and like in big companies, or like if you specifically go for group of vacancies, like a lot of companies may be hiring like CNOS, GSK, Efficacy, IQVIA, then they will hire like in every 4 or 6 months. Vishal is telling CNOS took fraud hiring. No one was hired in interview process. Are you sure, Vishal? बिकॉज सीनोज में हमारे भी आई थिंक कैंडिडेट के साथ ऐसा ही हुआ, उनका भी इंटरव्यू हुआ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. बट आप श्योर हो कि मतलब आपको पता है कि सारे कैंडिडेट जो जिनके इंटरव्यू लिए थे उनको उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया? बिकॉज डिफरेंट रीजंस कैन बी कि शायद कैंडिडेट सेलेक्ट ना हुए हों, क्योंकि कुछ कैंडिडेट तो उनको सेलेक्ट करने ही थे, तो उनको उतने मिनिमम कैंडिडेट जितनी वैकेंसीज थी उतने तो हायर करेंगे ही. फ्रॉड तो मतलब एक फ्रॉड तो देखो कॉमन इंटरव्यूज में, फ्रेशर के इंटरव्यू में क्या होता है, देखो एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है ना, तब आपकी डिमांड होती है मार्केट में, ईच एंड एवरी कंपनी विल बी लुकिंग फॉर यू. तब आपको कहीं पे जैक लगाने की, कहीं पे भी ज्यादा पहचान लगाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. A minimum, a small reference is also fine. Okay. Sorry. तो एक्सपीरियंस होने के बाद, सो एक मिनट गाइस. सो फाइनली मेरे गले का अलार्म बज चुका था. हर आधे घंटे में कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा बोलने से भी या गले का टेक केयर नहीं करते तो भी. सो मैं इंटरव्यूज के बारे में बता रहा था. देखो इंटरव्यू में एक फ्रॉड तो कॉमन है गाइस,
कि इंटरव्यू जितने भी लिए जाते हैं ना, लेट सपोज कंपनी को 15 या 20 लोग हायर करने हैं, तो 15-20 में से मुझे लगता है 3-4 तो चले ही जाते हैं। 3-4 जो वैकेंसी होती है ना, मुझे लगता है वो 100% 3-4 वैकेंसीज या तो बायस में कि पहचान का बंदा हो या कोई जानता हो, या तो दूसरा मतलब पैसे देके, ठीक है, किसी ने पैसे लगाए हो, कहीं से खास रेफरेंस हो, ऐसे मतलब 3-4 वैकेंसीज तो उड़ जाते हैं। बट आई बिलीव कि सारे के सारे नहीं जाते, ये मैं पैटर्न जानता हूँ। लेट सपोज 100% वैकेंसी है, 100% में से 30% बायस में ऐसे ऐसे सब जा सकते, 30-40 मैक्स, बट रिमेनिंग 60-70% वो तो उसमें ओपन मार्केट में से ही हायरिंग होती है, उसमें किसी की कोई पहचान नहीं होती, बस आपको इंटरव्यू देना होता है। तो मतलब पूरी वैकेंसी में फ्रॉड हो जाए वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, 20 वैकेंसी थी, 20 वैकेंसी में से 3-4 में उन्होंने सेट कर दिया, ये होता है, ठीक है, ये मुझे भी पता चलता है। Okay, so finally we can continue again. My gadget is bullying, my gadget is telling, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन प्रॉक यूनिवेरिएंट। So proc univariate में like why we need to make a entire video, my gadget? In proc univariate, mostly you run proc univariate to find the outliers. Okay, there will be like a lot of outputs it will be giving you in the result window, but majorly your focus should be like the 5 minimum values and the 5 maximum values for the variable you are selecting. Okay, let's suppose you are selecting the age variable, so it will give you the 5 maximum age values and 5 minimum age values. Okay, and along with the row number, observation number. And so once you will run the proc univariate, once you will select the variable, okay, any variable you can select and will detect the outliers. So once you will run, a lot of reports will come. So once you will go to the last report, the last report will be this table I am talking about, finding outliers. Okay, so I don't think like especially on proc univariant we need an entire video. If yes, tell me what is the reason, what you want to know especially in the proc univariant. Sainath is asking, where are you from, sir? Sainath, currently I'm living in Gujarat, Vadodara, and I belong from UP. Animal and natures. Sir, I'm planning BSc and D Pharma student. So what should I do? I'm confused between clinical science, clinical research. So if you need career related guidance, animal and natures, instead of like just telling in the live video, you can just connect me through one-to-one counseling session. In this video as well, and in the channel about section, you'll be finding one-to-one counseling session. Through that, you can book a slot and we can have a detailed discussion what you should choose according to your preference or according to your educational background. Okay. Sandesh is asking how much knowledge is required for clinical science programmers. Sir, please elaborate. I already made a lot of videos on that, Sandesh, like what are the requirements, what you should know as a fresher. Again, I'm repeating, okay. So you should have the knowledge of base SAS, advanced SAS, clinical SAS. And in the clinical SAS or apart from clinical SAS, you are doing separately then project knowledge. What do I mean by project? In the project, you should know how to create SDM dataset, ADAM dataset, table and listing. So when I'm telling SDM, ADAM, table and listing, so you have to create a lot of
SDM data set, Adam, table, and listing. So at least you should able to create one SDM data set, one Adam, one table, and one listing. This is what you should learn, or you should have the knowledge. Okay. So base, advanced, and clinical. And in the clinical, especially creation of SDM data set, Adam data set, table, and listing. At least one from each. Hope you got the clarity up to certain level. Error is asking, after working as SAS programmer in clinical industry for a few years, can we switch to the data science role? Of course, because in clinical also you are analyzing the data, right? So if you are moving to the data science role, there is nothing like much different, right? Only you might have to learn more tool, or you have to understand the entire process. Let's suppose as a working as a clinical SAS programmer, you'll be mostly analyzing the data, and you'll be creating SDM, Adam, table, listing reports, okay, or final data sets. But as in data science, you should have the knowledge of whole thing, how the data is collected, how the data is analyzed, and how you can process the data in large level. But as a clinical SAS programmer or statistical programmer, your role requires a specific things. Before you, there will be CDM team who will be cleaning the data, will be making standard up to certain level. Okay. Before that, CRAs will be there. Okay, will be collecting the data from site and filling into the database. So there are different departments in clinical to perform the task. But as a data scientist, you should have the knowledge of entire flow mostly. So if you're working on any data roles, you can become data scientist like easily. There is not much difference, but yeah, you need to make sure you are spending some time on any role, like it is data engineer, data analyst, okay, for at least 1 or 2 year or 3 year. So you'll get some knowledge, right? Then only you can move forward. Even if you are working on any like data analysis tool or any data analysis role, okay, in future you can move to data scientist as well and AI ML as well. गौरव, उस सेम इंटरव्यू में जिसमें आप बोल रहे हो ना, इस ईयर जो जून में हुए थे आई थिंक, एंड 4 महीने तक या 4 या 5 मंथ्स तक ट्रेनिंग चली थी अप्रॉक्स, आई थिंक गौरव 4 मंथ्स तक शायद ट्रेनिंग चली थी. तो उसमें मेरे भी स्टूडेंट एक सेलेक्ट हुई थी. ओके, एंड मेरी भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुई थी. तो आई थिंक उन्होंने बताया था कि टोटल कुछ 20 कुछ कैंडिडेट्स से, उसमें से उन्होंने 12 या 13 को लिया, ऐसा कुछ था. तो उसमें से हाँ, मतलब काफ़ी लोगों को यानी 20 में से अगर 12, 13 या 14 को लिया, तो मतलब 6-7 को तो उन्होंने रिजेक्ट किया. बट आपने क्या नोटिस किया गौरव? अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? अभी मेरे स्टूडेंट जो थी वो तो सेलेक्ट हो गई, ठीक है, एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, बट हाँ, उन्होंने भी, सबने जो भी सेलेक्ट हुआ, ऑफकोर्स पहली चीज़ तो है उन्होंने मेहनत की होगी ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है. उनका मतलब ये चीज़ था कि देखो, कोई भी किसी चीज़ को सीखता है तो बहुत ज़्यादा तो उसे नॉलेज नहीं होता, बट एक हद तक वो अचीव कर लेता है. उसके बाद वो डिपेंड करता है वो बंदा कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. तो आपको क्या लगा, आपने क्या मेहनत की, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? आपको ऐसा लग रहा है कि बायस हुआ कुछ ऐसा, या कहाँ कमी रह गई? आपको क्या लग रहा है? आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में शेयर करो. मे बी आई कैन गिव यू सम फीडबैक. Mrityunjay is asking, hi sir, currently working in R&D sector, one of the CRO clinical, can now system. Yes, can. Yes, that will help you to get selected. It is not mandatory that they will consider your experience, okay, but your previous experience will help you to get this job easily. That is for sure. Ram Hari Kale is asking, how can I connect you, sir? Ram Hari, there is an option in the channel about section, one-to-one counseling, or in this live video you'll find a link in the description, one-to-one counseling. From there you can connect to me.
Vishal Pandey, sure, there were 10 students with me. I connected, no one was selected. But Vishal, उसमें क्या हुआ था? Vishal, there were like multiple rooms. In the room you are there, na? There are 10 students. But what I got to know, there were multiple rooms. In each of the room, multiple students are there. There are different rooms. So let's suppose in your room 10 students are there, and like let's suppose they are having 10 rooms or 10 kind of, you can say, group. Okay, in one group you are there in the 10 group. So maybe in the other group they have selected some people. But what I found, I think it was in CNOS or GSK, I forgot. I shared in previous video experience कि CNOS में ऐसा हुआ था कि ऐसा हुआ था उसमें कि कुछ लोगों का ही एक रूम में, जैसे मेरे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बताया कि सर जिस ग्रुप में मैं था, ठीक है, वो भी जैसे आप 10 लोगों के साथ थे, वो भी किसी 10 लोगों के साथ थे, बट ऐसे बहुत सारे मीटिंग चल रही थी। वो आप समझो जिस 10 में थे, आप 10 ही नहीं थे, और भी 10 के ग्रुप बने हुए थे। एक उन्होंने मीटिंग या उसमें 10-20 जो भी रखे होंगे कैंडिडेट्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे उन्होंने वो क्रिएट किए हुए थे रूम्स, ठीक है, ऑनलाइन ही। तो उन्होंने ये बोला कि सर मैंने देखा कि कुछ आई थिंक सीनोस का था या जीएसके का, आई फॉरगॉट, बट उन्होंने बताया कि सर 2 स्टूडेंट ऐसे थे कि उनका हर चीज़ टाइम पे हो जा रहा था, उनको इंटरनेट का कुछ भी इशू नहीं आ रहा था। बाकी जितने भी स्टूडेंट थे उनको इंटरनेट का, और मतलब इंटरनेट का नहीं, बट वैसे कि वहाँ पे रिफ्रेश करने का पेज नहीं से सही से काम कर रहा था, सर्वर पे कुछ एरर आ रहा था, वो इनको इशू आ रहा था। सो दैट वाज समथिंग आई वाज क्यूरियस कि सिर्फ वो 2 लोगों को कुछ भी इशू नहीं आ रहा था, फिर बाकी लोगों को आ रहा था। तो वो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि ऐसा क्यों, वो 2 लोगों को इशू क्यों नहीं आ रहा था और बाकी सबको इशू क्यों हो रहा था। बट जैसे कि आपके पास एक ग्रुप का डेटा है, आपने बताया कि आपके ग्रुप में सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर हमारे ग्रुप में 2 लोग थे जो सब कुछ ऑन टाइम कर रहे थे और उनको कोई टेक्निकल इशू फेस नहीं हो रहा था, और 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबको टेक्निकल इशू फेस हो रहा था। मैं क्या मतलब किसी एक ग्रुप के उस पर, या समझो कि आपने बताया या उन्होंने बताया, उस पर हम जज नहीं कर सकते कि गलत हुआ है कि सही। बट कुछ चीज़ें तो हाँ, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जैसे मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ 2 लोगों को इशू नहीं फेस हो रहा था और बाकी सबको इशू फेस हो रहा था। ठीक है, वो पेज लोड नहीं हो रहे थे, फिर वहाँ पे एचआर ने सजेस्ट किया कि आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने को चला जा रहा था वापस, उनका टाइम वेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा तो सस्पिशियस थी, बट या स्टिल वी कैन नॉट कंक्लूड द थिंग्स। हीरक सर, मुझे सीना कैसे कॉन्टेक्ट करें? हीरक सेम वे में चैनल के अबाउट सेक्शन में 1-to-1 काउंसलिंग का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो। हेलो साहिल, what are the use of SAS certification exam? Some companies do prefer or give the preference to the students who are SAS certified. Okay, so it means like as a fresher, if you are having SAS certification, so that will boost your getting interview process up to 20%. Okay, it is not like कि 100% आपको इंटरव्यू मिल जाएंगे, आप क्रैक कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली वो सैस सर्टिफिकेशन के लिए भी आपको सैस की नॉलेज होने के लिए चाहिए और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी, बट द सैट सर्टिफिकेशन विल बूस्ट योर इंटरव्यू प्रोसेस अप टू 10 or 20%. Okay, not more than that. नेबुला फ्रेशर जॉब्स के लिए तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो क्रिएट की है, मेरे स्टूडेंट के साथ भी क्रिएट की कैसे उन्होंने जॉब फाइंड की, और मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, यू कैन गो एंड चेक दोस्त। Sal is asking, hello sir, I'm internship of Farm B.
It is only half day. Do I have a chance to get internship in SaaS? Yes, you can do it, Sahil. But mostly for getting internship or job in SaaS, you need to have the knowledge of base, advanced, and clinical. That is the requirement. Even you can get the internship or job on the basis of education only. Like if you have relevant education, like you're telling about PharmD or statistics or life science background if you're having, but the ratio is very less. Getting the internship or job on clinical science programmer on the basis of education, because a lot of candidates are there in the market who are having the knowledge of that role, right? That is like base, advanced, and clinical. So it's better to have the knowledge and then like look for the internship or job, especially on this role, statistical programmer or clinical science programmer. Sweta, like in the last 9 months, already in the last 9 months, 5 to 6 times opening were there. I'm not talking about 5 to 6 companies, 5 to 6 times. 5 to 6 times what I have seen that a lot of companies have hired. Like some month I have seen 2 3 companies are hiring, and another like just after 1 2 3 months, another like some companies are hiring. And recently, last 2 or 3 months back, like Cenos, GSK, IQVIA, Efficacy, these companies have hired. Okay, so at least I have seen already 5 to 6 times openings were there. Okay, in a lot of companies. बट या द केस इज दैट ना कि जब भी इंटरव्यू होते हैं तो सबको एक टाइम पे नहीं मिलते. लेट सपोज 1000 पीपल आर देयर एंड एक कंपनी में लेट सपोज वैकेंसी है. ओके, और 3 कंपनी में वैकेंसी है, तो तीनों कंपनी की लेट सपोज कि एक टाइम पे 3 कंपनी में वैकेंसी है, तो 3 कंपनी में एज्यूम करते हैं हर एक कंपनी में एवरेज 15 वैकेंसीज है. इट मीन्स दे विल हायर 15 कैंडिडेट्स. सो 15 कैंडिडेट्स को हायर करेंगे तो 3 कंपनी का कितना हो गया? लेट सपोज 2 कंपनीज का 30, 3 कंपनीज का कितना हो गया? 45, राइट? 45 कैंडिडेट्स उनको हायर करने हैं. लेट सपोज अ पर्टिकुलर मंथ्स में, एक पर्टिकुलर मंथ में 3 कंपनी हायर कर रहे हैं. अब 45 के लिए वो कितना इंटरव्यू लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन वो तीनों की तीनों कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 कैंडिडेट के इंटरव्यू लेंगे वो, राइट? मार्केट में समझो 1000 लोग हैं सेस की जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू ढूंढ रहे हैं, तो 1000 में से एक टाइम पे जब वैकेंसी था 3 कंपनी में लेट सपोज जिसमें कंबाइन 45 वैकेंसीज थी, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने 200 लोगों के इंटरव्यू लिए और 200 में से उन्होंने लेट सपोज 45 सेलेक्ट कर लिए. 200 या 250 लोगों के इंटरव्यू लिए और 45 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, तो यानी 250 लोगों को इंटरव्यू मिला, सिलेक्शन 45 का हुआ. तो फिर भी आप देखोगे तो इंटरव्यू ना मिलने वाले लोग कितने हो गए? अगर सिर्फ समझो कि 200 को इंटरव्यू मिला तो ना मिलने वाले लोग 800 हो गए, ठीक है. तो ये इसीलिए हमेशा आप जब लाइव आते हो ना या जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे मन में ये चीज़ रहती है कि मतलब कि मैं कैसे ये चीज़ बताऊं कि देखो कभी भी इंटरव्यू होगा ना, इसलिए आप हमेशा ऐसी पॉपुलेशन देखोगे कि इंटरव्यू नहीं मिला ना वो ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होगी, और इंटरव्यू मिला और सिलेक्शन हुआ वो हमेशा पॉपुलेशन कम होती है. क्योंकि मैंने जो आपको अभी सिंपल सा फंडा बताया, 1000 लोग हैं, 45 वैकेंसी एक टाइम पे, 200 का इंटरव्यू होने वाला है, तो 200 को इंटरव्यू मिला, उसमें से सिलेक्शन 45 का हुआ एंड 800 पीपल को इंटरव्यू नहीं मिला. इसलिए ये सवाल मन में बार बार आते हैं कि व्हेन डू वी गेट ओपनिंग्स फॉर SaaS. बट ये होता है कि अगर आप कंसिस्टेंट तरीके से अप्लाई कर रहे होगे सही तरीके से, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इंटरव्यू निकले. आपने आज से अप्लाई करना शुरू किया, दूसरे महीने इंटरव्यू निकले, आपको नहीं मिला, चलो मान लिया, क्योंकि आपने अभी अप्लाई करना शुरू किया था, आपसे पहले से लोग अप्लाई कर रहे थे, उनका CV स्प्रेड हो चुका था ज़्यादा, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको नहीं मिला. बट दूसरे महीने नहीं मिला, बट तीसरे, चौथे, 5वें या 6ठे महीने तक तो आपको एक इंटरव्यू तो मिनिमम मिल ही जाएगा. और अगर अच्छे से करोगे तो 6 महीने के अंदर मिनिमम आपको 2 इंटरव्यू मिल जाएंगे, 2 से 3, ठीक है. तो ये पैटर्न होता है श्वेता. होप यू गॉट द क्लियरिटी एंड एवरीवन एल्स एज वेल.
अभिषेक, श्वेता का जो मैंने क्वेश्चन का आंसर किया ना, यही आपके क्वेश्चन का भी आंसर है एग्जैक्टली। See, from any domain, okay, any domain, you just create at least one data set from SDM, from Adam. Okay. Nayan, I'm learning data analysis full time course SQL Python says. Is it good? Yeah, Nayan, that's good. But make sure you have the proper guidance. Okay, you should know how much time it's gonna take, how you're gonna apply for job, how they take interviews for this role, the role you are preparing for. Okay, how much time it's gonna take, the whole process for getting job. Just get guidance from some working professional or from the place you are learning. अनिमेश बोल रहे हैं कि in which months more calls are the Java developer. So Animesh is a Java developer. He have learned knowledge related to Java developer, and from last 5 months not attending any one interview. Animesh बोल रहे हैं कि मैंने जावा सीखा है जावा डेवलपर के लिए और लास्ट 5 महीने से एक भी इंटरव्यू नहीं मिला। ठीक है, सो अनिमेश, मैंने हाउ टू फाइंड जॉब्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वो जाके देख सकते हो। एंड उसमें से आपको कुछ आइडिया नहीं मिलता है तो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मे बी आई कैन गाइड यू एंड दैट कैन बूस्ट योर प्रोसेस फॉर गेटिंग इंटरव्यूज। Kati Sai Kiran, sir, how to become SaaS developer? SaaS developer, okay, let me create a video on this. See, SaaS developer role, see, clinical SaaS programmer or the people who are using the tool, na, so their role will be specific related to industry. Okay, like clinical SaaS programmer or fraud analyst in banking or insurance. A lot of these roles are there on the basis of SaaS. But if we talk about SaaS, if we talk about SaaS developer exactly, so these are the people who help in the admin roles in the SaaS. They can call themselves SaaS admin as well. SaaS developer can be SaaS admin as well, okay, who might help in the installation or maintaining the SaaS software in the system, okay, in the company. Or the developer can be the next thing that the person or the people who develop the SaaS software. You might get a job in SaaS company as well, okay. You might have to work with clients to gather their requirements and what improvement they need in the software and what can be improved, and same you can improve it in the software, okay, and you can discuss with your team or with the SaaS company. I think SaaS is having their R&D center in Pune, SaaS company, so they actively develop their software as well. So SaaS developer role will be like, it will be more on the software end instead of like working in the industry end. But you will be developing the software or maintaining the software for industry only. You will be understanding the industry need only. But instead of working for the industry needs like directly for a single role, you will be more working on the software end, in developing the software end or maintaining the software. Why I cannot tell you specific role and responsibility of SaaS developer? Because a lot of companies follow a lot of different ways or different workflow. Let me tell you, like in the Pfizer, they have had recently clinical SaaS programmer or statistical programmer. So they have given the role associate statistical data scientist or something like this. They have given the role. So you can see the same, like people who are working on this software, like work creating SDM, Adam, these things, they are being called as statistical as well, clinical SaaS programmer as well, and associate statistical data scientist as well.
So a lot of companies follows different way of like the profile, like they call it in a different way or they change it accordingly. Okay. Gaurav is telling, जैसे कैमरा काम कर रहा है कि नहीं? ओके, आई थिंक कैमरा इज वर्किंग राइट. गाइस मुझे एक बार ये कंफर्म करो कि मेरी ऑडियो और वीडियो विजिबल है कि नहीं. जस्ट कंफर्म मी. कैन यू सी मी लाइव? Gaurav is telling, no sir, we were 25 people for internship. Okay, 25 people, out of which 14 they took. And I feel I was not up to mark, but now I am not getting full-time opportunity, sir. Any suggestion for me? Gaurav, see one thing, आपने फाइजर से इंटर्नशिप की राइट. सो एक चीज़ है, आपने इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखा होगा, उसकी आप प्रैक्टिस करो. एंड आप अभी एक्टिवली, क्योंकि आपने रिसेंटली इंटर्नशिप अभी जस्ट आई थिंक 1-2 मंथ्स पहले ही ख़त्म हुई है अभी. आई थिंक 1 या 2 मंथ्स ही हुए, क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था कि उनका सिलेक्शन हो गया फाइनली. ठीक है. एंड सैलरी वैलरी भी इंक्रीमेंट कर दी उनकी डायरेक्ट इंटर्नशिप के बाद ही. तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने रिसेंटली इंटर्नशिप कंप्लीट किया राइट फाइजर से. अभी आप एक्टिवली अप्लाई करना शुरू कर दो. इफिकेसी मोस्टली, लैपकॉप, जितनी भी बिग कंपनीज है, लिली, बिकॉज आपने फाइजर से किया है तो फाइजर भी बड़ी कंपनी है राइट. तो आप एक्टिवली अप्लाई करो. कैसे अप्लाई करो? आप अप्रोच करो लोगों को लिंक्डइन पे डायरेक्टली, लाइक उनके वेबसाइट पे अप्लाई करके वेट मत करना. एक्टिवली अप्रोच मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीनियर्स, those who are working on this role, statistical programmer और clinical SAS programmer. एंड आपके पास इंटर्नशिप है 4 मंथ्स या 5 मंथ्स की, तो आपके लिए प्रोसेस थोड़ा बूस्ट हो सकता है कंपेयर टू एनी अदर हु इज टोटली फ्रेशर, जिसने कुछ भी काम ना किया. तो या इट विल हेल्प यू. बट एक्टिवली आप लोगों को कनेक्ट करो, अप्रोच करो. ऐसा मत वेट करो कि मुझे वो पोस्ट दिखेगी वैकेंसीज की तो मैं अप्लाई करूँगा. आप लोगों को एक्टिवली अप्रोच करो. बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड कि पोस्ट आती ही नहीं है फ्रेशर के लिए. सो आपने किसी को या आप सभी को अप्रोच करोगे तो किसी को भी इंटरव्यू का पता चलेगा, ही विल रिवर्ट यू बैक वंस ही विल गेट टू नो अबाउट इंटरव्यू. तो आपके चांसेस उस वे से ज़्यादा हैं इंटरव्यू मिलने और सिलेक्शन के, इंस्टेड ऑफ वेबसाइट से अप्लाई करना या ऐसे पोस्ट पे अप्लाई करने की जगह. ओके. कति बोल रहे हैं सर क्लिनिकल साइंस में एनी मैथ्स फार्मूला शुड अप्लाई. देखो मैथ्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, मतलब मैथ्स के भी हो गए समझ लो, बट वो हमें नहीं अप्लाई करने रहते. हमें जस्ट सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम रन, कोड रन करना रहता है एंड सॉफ्टवेयर विल टेक केयर ऑफ दैट. ओके. जैसे कैलकुलेटर आने के बाद यू डोंट डू द कैलकुलेशन राइट, आप सिर्फ कैलकुलेटर में बटन प्रेस करते हो. इन द सेम वे सॉफ्टवेयर आर मच मोर कैपेबल. जो सॉफ्टवेयर है सैस, स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है. तो जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना है, जो भी कैलकुलेशन करना है, इट विल बी परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर ओनली. बट आपको सिर्फ कोड लिखना पड़ेगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड. दैट्स ओनली थिंग. सो डोंट वरी कि अगर मैथ्स वीक है या कैलकुलेशन नहीं आता, सो डोंट वरी, आपसे नहीं कराया जाएगा कैलकुलेशन, वो सॉफ्टवेयर करने वाला है. जस्ट यू नीड टू नो द कोडिंग. दृष्टिकोण पूछ रहे हैं हाउ टू गेट जॉब एट द एज 32 after 5 years of gap at the end. Just thinking about your opinion.
Drishtikon, do one thing, just connect me through one-to-one counseling. There we'll discuss in detail, and don't worry अबाउट द एज, या कि एक चीज़ होता है कि जितना हमारा एज बढ़ता जाता है ना, मैंने देखा पढ़ाई पूरी करने के बाद है ना, एक स्टूडेंट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि वो जॉब ले, लेकिन बर्डन भी हो जाता है. एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम बर्डन विथ मूविंग टाइम. तो ये प्रॉब्लम लगने लगती है कि सोसाइटी में जिस एज पे स्टूडेंट के बाद आपको हेल्प मिलनी चाहिए, आप पर प्रेशर क्रिएट होने लगता है. और जैसे जैसे पढ़ाई के बाद तो प्रेशर रहता ही, आपकी एज बढ़ती है प्रेशर बढ़ता जाता है. सोसाइटी से हमें गाइडेंस और हेल्प मिलना चाहिए, बट प्रेशर बढ़ता जाता है. सो दृष्टिकोण, आप मुझे कनेक्ट करो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू, एंड वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. एंड डोंट वरी, आपको जॉब मिल जाएगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको मिल जाएगी. डोंट वरी अबाउट दैट. बट अब अगर आपकी एज अभी 32 है ना, तो इस एज में आपको मिल जाएगी. you'll don't have to wait for 33-34 अगेन. बट वही होता है कि हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, हमें करना क्या है, कितना टाइम लगेगा, क्या सीखना है, एंड ये सारी चीज़ें, कैसे इंटरव्यू होता है. एंड देन वंस यू स्टार्ट मूविंग ऑन दैट वे, कोई एक चीज़ पे आप मूव करना शुरू कर देते हो तो फिर आगे ही बढ़ते हो. ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीना, 7 महीना या 8 महीने लगे, एंड यू विल गेट इट फॉर श्योर. Rishikesh, sir, nowadays there is no opening freshers as program. In which month? Rishikesh, अभी I think ऊपर मैंने just go back in this video. There is one question by Sweta, I think. Where is that question? Recently मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बताया. At least I spent 5 minutes. तो इस वीडियो को आप थोड़ा रिवाइंड कर लेना, you'll get it. Sahil, yes sir, I have knowledge of base advance only by completing my PharmD I'll be graduated. Yes, Sahil, mostly once you complete your graduation or in the last semester, you can get a job or internship, not while pursuing. That is correct. Because for companies, a lot of options are there, right? Once they are hiring you for internship, okay, most probably their purpose is to get you in the company, right? To select you. So they have a lot of candidates, right, who have completed their masters or graduation. So instead of people who are still continuing their education, either it's master or graduation, they are choosing the people who have completed it. That's why. Because their main agenda is once you will complete their internship, and if you are a good candidate, they will directly hire you. But if you are doing your education, if you are in 3rd semester, 4th semester, after completing the internship, they cannot hire you, right? So that's a catch. Okay, so Dipesh, how are you? I'm doing great. Hey Priyanshu. Rebel is asking, how is the software testing for non-IT background like Mac? Rebel, for software testing, I have talked a lot that if you are learning something, don't go for software testing. क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या है कि इंडस्ट्री में हर किसी को मोस्टली टेस्टिंग सजेस्ट किया जा रहा है जिसको टेक्निकल नॉलेज ना हो. तो टेस्टिंग में क्या है कि कोहर्ट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कि टेस्टिंग सीख रही है. तो आप बहुत सारे ऑप्शंस है, डेटा एनालिसिस हो गया, क्लाउड हो गया,
एंड ERP हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लाइक being on testing part. That like there are a lot of more better options are there in the market. Okay, so guys, if you have any more questions you can ask me quickly. We'll end our live session in another 5 minutes. Kalyan is asking a question. I'm 2016 Mac BTech pass out. I have wasted my whole time. I did not do anything, not even government job preparation. Please tell me what to do now. Should I put fake experience? I learn any programming skill? Kalyan, it will take 1 year for you. You can learn anything. Data analysis, cloud, or like data analysis or data science, both are like almost same. Then cloud, then cyber security. These are the 3 options you can explore for. Okay, and if you believe that मैं कुछ भी अच्छे से सीख लूंगा, आप मुझे कुछ भी काम दे दो मैं कर लूंगा, इफ यू आर दैट गाय कि आपको जो मिला आप मन लगा के कर लोगे, आप टैलेंटेड व्यक्ति हो, तो गो फॉर फुल स्टैक. ओके, सो डेटा एनालिसिस, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी एंड फुल स्टैक. ठीक है, फुल स्टैक तभी करना जब आप कॉन्फिडेंट हो खुद पे कि मैं जो भी मिले मैं सीख लूंगा, क्योंकि फुल स्टैक डिफिकल्ट होता है. ठीक है, सीखना प्रेशर को. बट डेटा एनालिसिस, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी कंपैरेटिवली फुल स्टैक इजी होता है. सो दिस विल बी द ऑप्शंस फॉर यू. एंड या द मैक्स 1 year इट विल टेक, बट जिस दिन से आप शुरू करते हो उस दिन से मैक्सिमम 1 year लगेगा. 1 year में आपका जो भी था, आपने 2016 में पास आउट हुआ, गैप हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया. बट मैंने जो अभी बोला 1 year में आप अगर अच्छे से मन लगा के मेहनत करते हो, अच्छे से सीखते हो, तो आपका हो जाएगा 100%. ऋतुराज, इसके लिए तो मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली, यू कैन चेक ऑन माय चैनल. कल्याण, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन. Dipesh is asking, hello sir, is it true that there will be an opening for job in between till year ending? Because I have heard some rumors also, news, some articles regarding increase in hiring for IT. देखो दीपेश, आप तो मेरे स्टूडेंट भी हो, आपको तो पता ही होगा चीज़ें, जैसे मैं बताता हूँ कि कभी भी न्यूज़, लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म के भरोसे ज़्यादा डिसीजन या दिमाग में सोचना ही नहीं चाहिए. 2 चीज़ें होती हैं कि आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कैंडिडेट हो, राइट दीपेश? आपने सीखा है क्लिनिकल साइंस, आपको चाहिए क्लिनिकल साइंस में जॉब. दूसरी चीज़ होती है कि अब क्लिनिकल साइंस की जॉब ढूंढनी है या मतलब जॉब लेनी है. ठीक है, तो आपको पता ही होगा प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है चीज़ों को जानने के लिए. बट कभी भी लिंक्डइन या न्यूज़ आर्टिकल पे डिपेंड मत रहना ये जानने के लिए कि ओपनिंग्स होने वाली है या नहीं होने वाली है. ओके, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता. सो वन थिंग इज दैट हमें क्या करना चाहिए कि एक्टिवली अप्लाई करना चाहिए. डेली आप लोगों को कम्युनिकेट करो, डेली अप्लाई करो, जब भी इंटरव्यू होगा ना वो अपने आप मिल जाएगा. क्योंकि देखो मेरा तो फंडा एकदम क्लियर है,
कि समझो कि मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे उसमें जॉब लेनी है। अब मार्केट में कुछ भी चल रहा है, मैं मेरी कोशिश करता रहूँगा, यानी मैंने सीखा है, मुझे जॉब लेनी है, मार्केट लो चल रहा है, अप चल रहा है, मैं ट्राई करता रहूँगा, राइट। तो क्योंकि मार्केट का क्या होता है और न्यूज़ का क्या होता है, उनके भरोसे, मतलब क्योंकि जो हायरिंग्स, फ्रीजिंग्स, ये सारी चीज़ें होती है ना, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पे होते हैं, ग्लोबली कैसा चल रहा है, ठीक है, ग्लोबली काम कैसा चल रहा है, ग्लोबली कंट्रीज कैसी चल रही हैं, क्योंकि अभी किसी न्यूज़ आर्टिकल ने ऐसा प्रिंट किया तो ग्लोबली सेंटिमेंट खराब होंगे, तो वही न्यूज़ आर्टिकल कल कुछ और भी प्रिंट कर देगा, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, लिंक्डइन पे क्या चल रहा है, वो छोड़ दो, आपने सीखा है डेली अप्लाई करो। एंड एक चीज़ है कि जो ईयर एंडिंग होता है ना, जैसे कि मैंने देखा है अगस्त से लेके दिसंबर या जैन तक हायरिंग रहती है, ओके, उनके बीच बीच में हायरिंग, अच्छी खासी हायरिंग होती है कंपनीज में। Shubho, sir, I have asked a question earlier. Could you please look into that? Shubho, I think that question went very back because I'm unable to see that question, Shubho. Yeah, I got it. Hello, sir. Which one will be better? Clinical SaaS, clinical data management in terms of salary and growth? Of course, the answer is very easy. See, straight away, CDM and clinical SaaS. In the salaries of clinical SaaS and CDM, there is not that much, but 20% or 30% different is there. Still 20% a minimum. Salaries of a statistical programmer is 20 or 30% more than the clinical data management or CDM programmer. The difference can be from 10% to 30%. So clinical SaaS programmer will be 10 to 30% more salary than the CDM programmer. But still, जब मैं बोल रहा हूँ कि statistical programmer को more मिलती है, तो it doesn't mean that CDM programmer is getting low. See, in the CRO, what I have found, biostatistician, statistical programmer, and CDM, they earn a lot. These three roles: biostatistician, statistical programmer, and CDM. So even there is a 10 to 30% of difference, CDM programmer on a good salary, okay? But still, like, yeah, like statistical or clinical SaaS, they earn 30% or 10% more than the CDM. That is true. Hope you got your answer. So guys, finally, I think we are not getting much questions now. We can wind up our session. And guys, don't worry, this is life only, ठीक है, आपको सिर्फ एक जॉब लेनी है. And yeah, initially it was difficult for me as well till the time I got it. If you are finding the jobs and if you are finding difficulty, but हाँ, मार्केट का असर तो पड़ता है. जैसे कोविड में हायरिंग कम हुई थी और कोविड के बाद हायरिंग बढ़ गई थी, ठीक है. सो मार्केट का असर तो पड़ता है फॉर श्योर, ये बात मानी जा सकती है, बट मार्केट के भरोसे नहीं रहना चाहिए. कीप अप्लाइंग, अप्लाई करते रहो, इंटरव्यूज लेने का ट्राई करते रहो. सही टाइम आने पे आपको कब इंटरव्यू मिल जाएगा, आप कब क्रैक कर दोगे, आपका कब सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. आपको लगेगा सारी चीज़ें सपना है, एवरीथिंग वाज अ ड्रीम. Okay, what happened, we try a lot and sometimes we lose our confidence or lose our motivation, but you don't know when you'll get the next interview and like when you will be suddenly cracking the interview. Okay, so don't lose your hope. Maybe the next day you can get interviews and the next day you can crack your interview. Okay, so that's why this process is continuous, right? इसीलिए इसमें इतना टाइम थोड़ा वेट लगता है कि वेट इस टाइम ड्यूरेशन में ही आधे से ज़्यादा लोग, लेट मी टेल यू, अगर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की तैयारी लोग कर रहे हैं ना, तो 100% में से 80% लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं कि मोटिवेशन लूज कर देते, प्रैक्टिस नहीं करते, अप्लाई नहीं करते. सो अ लॉट ऑफ रीजंस कैन बी. इंस्टीट्यूट में उनको बताया नहीं होता है शायद कि टाइम लगेगा या ऐसा कुछ होता है. कभी कभार मार्केट की वजह से भी डिले होता है थोड़ा. तो 80% स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, रिमेनिंग बचते हैं 30% या 20%.
20% के लिए तो इंडस्ट्री में स्पेस होती ही है, ठीक है, जैसे ही ओपनिंग अच्छी खासी निकलती है कभी भी, सो दे गेट इट. Sidhu, yes, I have started Sidhu, the offline one. Rebel, sir, data science field also becoming full because companies recruit experience or fresher from top college. Rebel, no, that is not a full truth. See, companies को क्या होता है कि Rebel, companies have to maintain a ratio, right? If they will start hiring people from off campus, okay, so what will happen, the students who are like looking for a job in the campus, so companies have to maintain a ratio that like this much people they'll be hiring from campus, this much ratio they'll be hiring from off campus, and some population from like they are already carrying some relevant experience and they'll hire them as a fresher on the demanding roles. So if you see the large data na, then you'll get the understanding. Because when I was a student, now I'm a trainer, right? I'm talking to a lot of students and connecting to like a lot of working professionals in a day-to-day basis, so I'm getting to know the whole process, how it is working. So actually companies need to maintain that ratio, right? And what happened, a lot of colleges do collab with the company, right, that come to in our campus and select the candidates, will give you these facilities, right? They make the process ease for the companies as well, right? The half process they'll be doing, the half process company will filter, finally they'll take the interview and they'll select. And what will happen, like for companies this process is little easier, right? They'll directly go in the campus, all the candidates will be fresh, they will already tell to the college that we require a candidates that have the minimum requirement this and this, like minimum percentage is this, minimum this and this, and filter these candidates accordingly, and finally we'll take the interview and select. So yeah, so they have some benefits as well, right? But it is not like that. Companies don't hire off campus, they hire from off campus as well. Okay, so for the same, companies have to maintain a ratio that they are hiring candidates from off campus as well and from campus as well. Jambudeep is asking, करना चाहते हैं सर. जम्बोदीप, आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो. आप जो ये लाइव वीडियो देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, 1-to-1 कंसल्टेंट का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि मुझसे कनेक्ट करने का, उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. एंड आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है. एंड जो ट्रेनिंग होती है अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होती है, एंड अगर ऑफलाइन पढ़ते हो तो वो सामने होती है. सो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती. ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो सेशन लाइव होते हैं और सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है, ये दोनों फैसिलिटीज़ रहती हैं. So guys, hope you all got some clarity. Okay, I believe not 100%, but whenever I'm doing the live, it might easily help at least 40% of people to get the clarity at least. तो अभी के लिए ये लाइव सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं अगले लाइव वीडियो में. एंड मैं ट्राई करूँगा कि हर सैटरडे या संडे को मैं लाइव करूँ ही, वीक में एटलीस्ट 1, ताकि मैं आपके एक्टिवली क्वेश्चंस ले सकूँ और मैं आपको बता सकूं, ठीक है. मतलब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा व्हाट एवर द थिंग्स आर देयर. Kati is asking, sir, SAS, in SAS maths is used, I am weak in maths. Kati, don't worry about maths, right? Let me tell you, I am a trainer of SAS, right? Or I have worked on this role. A lot of people are working. So I cleared my SAS in the last semester.
you know. So sometimes I haven't given my maths exam because of the fear. One time I have given in the regular sem, I was unable to clear. For the next two time I haven't given. I think in the last or second last semester I prepared in a well way and then I cleared. So even I was also weak in maths. But it doesn't like does it mean that I cannot like I didn't got the job? Okay, I even got a job. Now now I'm a trainer as well for this role, right? So now softwares are much capable of performing things. Even let's suppose if a company is giving you 100 data, 100 records, and you need to perform some calculation, you could do a mistake. Even if you are topper in maths, even if you are very excellent in maths, you can do some mistakes. But computers will not, right? So what is happening now? You don't need to do the calculation or statistics or mathematics. Computer will do, software will do. You just need to write a code. That's all. Hope you got my point, right? So don't worry about maths on any software role. Ubaid, it is in Vadodara, Gujarat. ओके सो गाइस दैट्स ऑल. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं लाइव सेशन में एंड मिलते हैं अगले लाइव में. तब तक के लिए अभी हम करते हैं गुड नाइट इस सेशन को एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों.